Hmm. How are you all? Fine, sir. Fine, sir. How are you, sir? I am okay. Yes. And Gaurav is okay. Karishma, please respond. Yes, sir. Okay, fine. I have instructed all of you to set virtual background. So have you tried Karishma? Because as I have got information, director sir has himself shared some virtual background in all groups. Sir, in our group, it didn't come, sir. Okay, fine. Okay. So please try to switch on your camera. I'm just saying try. जितने लोग कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए. ठीक है. Now, special permission. We have already discussed about two permissions. Yes, sir. Sir. Sticky bit and SGID. And now these two permissions are totally different. Like in sticky bit, we have to stop deletion of files from a directory. In spite of giving all permissions, full permission to the directory. And in SGID, if you have given full permission to any user to create, delete files into a directory, but after setting SGID permission, if any user will create a file into a directory, in that case, the group name will be as the owner of the directory name. Fine? है ना? ये बात समझ रहे? And now, one more special permission. SUID. In case of SUID, like few commands can be executed only by super user. कुछ कमांड ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ हम सुपर यूजर के हेल्प से रन करा सकते हैं. ठीक है? सुपर यूजर. जब हम सिर्फ सुपर यूजर से रन करा सकते हैं तो वैसे केस में तो हमें हमेशा सुपर यूजर से लॉगिन होना पड़ेगा. अब सुपर यूजर के प्रिविलेजेस चाहिए मुझे, यानी कि उसके क्रेडेंशियल्स चाहिए, नेम एंड पासवर्ड. बट वी वांट टू गिव permission to local user to run few commands. In that case, we can use SUID. First of all, we will face some problems for running few commands. Okay? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं. Is it true? Yes, sir. है ना? And now, Vinayak, your turn. You can share your screen. Yes, sir. Okay, fine. Now,
He is the local user. Yes, sir. And when I try to create a user account, just simple, मैं उसी कमांड को थ्रो करने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने ऑलरेडी चलाया हुआ, उसको समझते हैं. User add. Okay, fine. User add, then give a name like Pawan. Enter. Look, permission denied. In that case, you will use sudo command, but sudo privilege is in this case is only applicable to only those users who are in sudoers file. Fine. So Vinayak, you can do it, but log in with another user like Gupta or any other user. Raja. Fine. Now, Raja will use sudo command. Sudo. Yes. He is not in the sudo's file, but Raja would like to run user add command. So try to run user add command with Raja also. Fine. Now, we want to give a special permission at this user add command by which any other local user can run this command and add a user account. ठीक है, जिससे कोई भी लोकल यूजर इस कमांड को रन करा ले और यूजर अकाउंट, एक नया यूजर अकाउंट ऐड कर ले. ठीक है. ओके. नाउ अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, exit from Raja account. Okay, now Vinayak use sudo command, sudo space -i. Fine. Now clear the screen. Now the next point is, where is the user add command, or where is its program file? Because every command has a program by which it can run on the system. It can execute at the system. So as I have already guided all of you in the beginning of the class, when I was teaching about the file hierarchy, in that case, I have given you ideas that in root partition, multiple default directories are available. Root partition में बहुत सारे डायरेक्टरी होते हैं. उन डायरेक्टरी में एक बिन और एक एस बिन होता है. ठीक है. Yes. तो अब हम इन दोनों डायरेक्टरी को ओपन करेंगे बारी बारी से. देखो, क्योंकि कमांड चला देना ये अलग टास्क है, लेकिन एक आइडिया लेके चलाना कि हम उसको कहाँ रन करा रहे हैं, क्यों रन करा रहे हैं, वो फाइल कहाँ से निकाल रहा है, इस चीज को समझ लेंगे तो ठीक है. अदरवाइज कमांड का क्या है? chmod चलाया, नंबर डाला, फाइल नेम डाला, दैट्स इट. ठीक है. ठीक है गौरव. Yes, sir. कोमल. Yes, sir. Okay, fine. Now cd, use command cd slash just delete it. Okay, fine. cd space slash. Okay, cd space slash enter.
Now give ls command. Now see, in this partition, there is a bin file, bin in the beginning, bin, bin. Yes, sir. Yes, sir. And I think bin is the link, sir. bin, no, Link. bin. Link. No, is it is not link. Fine. And this is Aspen. Now somebody is saying that, sir, I think it is linked. For the confirmation, we will run ls space minus l. Fine. Now see, bin and Aspen. Right? Really it is linked. But where it is? Where is the original directory? Original directory is in USR. Then bin, USR. Then Aspen. Fine. And where is the USR? USR is here. Okay. Now, all those commands which can be executed by root user or local user are available into bin directory. And all those commands which can only run by super user, means root, is available into Aspen. So user add or add user command will be available into Aspen. Now fine. Use command cd, then USR, then slash Aspen. Enter. Now we are in the Aspen directory. Give command ls space minus l. Enter. Many files. Just. Fine. Again run command. It's the same. Again run same command. Stop. Space pipe symbol. Pipe symbol though? Yes. Space more. Enter. Press a space bar. Space bar. Space bar. Space bar. U तक जाना है हमें. Wait. US. No, one time more. The space bar. Just wait. User add. Yeah. And this is a file. And at this file, see the permission. This is an executable file. That's why it has read, write, execute. But read and execute permission is available with group or other user. Now we have to set the special permission at this file. Fine. Now it is clear कि हम क्या करने जा रहे हैं, कहां पे हमें चेंज करना है, अब वो कौन सी फाइल है. तो फाइल कहां अवेलेबल मिली? रूट पार्टीशन के अंदर, यूएसआर के अंदर एसबिन नाम. वैसे अगर आप RHEL लिनक्स को देखेंगे तो उसमें ये बिन और एसबिन डायरेक्टरी आपको रूट पार्टीशन के अंदर मिल जाएगी.
है ना, और यहाँ भी मिल रही है बट एज अ लिंक फाइल, लिंक डायरेक्टरी में। ठीक है, तो कहीं भी टारगेट हो आपको इसको सर्च कर लेना है कि ये फाइल होती कहाँ है, उसके बाद हम इसके ऊपर परमिशन डालेंगे ना, कंट्रोल सी, फाइन, क्लियर द स्क्रीन, फाइन। We have already used values like for sticky bit 1, for SGID 4. Now we have to use 2, then chmod space 4777 space user app. Fine, just enter. Okay, permission is okay. Now exit from root user account. Now log in with Raja account. Okay, fine. Now this Raja will try to create a user. Enter. Fine. In this way, all those commands can be run by a local user at which SUID permission has been given. Okay, but these type of tools are used by super user very carefully. We should not do it. करना नहीं चाहिए। बट क्या है कि हम अभी स्पेशल परमिशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने इन सब चीजों को भी देख लिया। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर माय डियर? Yes, sir. नाउ क्लियर दिस। 1 minute. Permission chapter. We should keep few things in our mind, like permission can be changed by the owner of the file or the super user. Yes, sir. Ownership can be changed only by super user. Ownership. Fine. Now, permission of a file or directory depends upon the parent directory. अगर parent directory पे नहीं है, तो अंदर आपने full permission भी डाला है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? उसके बाद परमिशन आप अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली दोनों तरीके से इंप्लीमेंट करके देखें। मुझे जहां तक लगता है सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल में ज्यादा कंफर्टेबल है ना, लेकिन अगर आप चाहें तो अल्फाबेटिकल भी यूज कर सकते हैं जब आपको कहीं से एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, तो आप आराम से यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम। परमिशन के लिए आप अल्फाबेट यूज करें या न्यूमेरिकल यूज करें, कोई भी, तो डायरेक्टरी पे एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूट का परमिशन जरूर होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टरी इटसेल्फ और एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अगर उस पे आपने एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं रखा और रीड का परमिशन दिया भी है, तो भी इसके अंदर कोई यूजर कुछ नहीं कर पाएगा। Sir, यस, sir, there are some disturbance which are coming like in voice, sir. इन माय वॉइस। Yes, sir.
Everybody getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बच्चे मैं तो बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम सेम वे में बोल रहा हूँ, एक ही स्पीड से बोल रहा हूँ. Right now it's clear, sir, but before that, like some. अच्छा तो थोड़ा सा माइक को कंधे पे रख लिया. ठीक है. मैं ये कह रहा था कि at a directory we should always keep execute permission. Execute permission हमेशा रखें. Otherwise, if you have given read permission, write permission, in spite of these two permissions, no any user can perform any task because nobody can open this directory. If nobody is able to open a directory, how he or she can perform some task like create some file, read some file, etc. At file, execute permission is not required mostly. But in some cases, if your file is an executable file, like in our case, user add is an executable file, that's Yes. why it has execute permission, means X. Correct? Okay. Yes, sir. Now, ACL, you can use ACL to give a specific permission to a specific user. It is good. At group also, and a special permission like SUID, SGID, and sticky bit. We should use these permissions very carefully. But आप सुपर यूजर प्रिविलेज तो ना ही दें, क्योंकि लिनक्स तो इवन ये भी कहता है कि रूट यूजर से कभी भी ग्राफिकली लॉगिन ना हो. ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें हर पहलू जानना होता है, हम करते हैं. कमांड में आप कोई भी कमांड्स जो रन कराते हैं, अगर आपको पाथ समझ में आता है, फाइल समझ में आता है, तो आप कहीं से कुछ भी रन करा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर. ठीक है, आप एक जो कहते हैं लिनक्स के एक कंप्यूटर पे बैठ जाओ, तो नेटवर्क में अगर थाउजेंड्स मशीन भी हैं, तो आप सारी मशीनों पे यूं काम कर सकते हो बहुत ही आसानी से. ठीक है, अब अभी तक हम अपने जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे थे, वी हैव परफॉर्म्ड ऑल टास्क. विनायक, Yes, sir. yes, we have performed all tasks for a local computer. हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर के लिए ये सारे टास्क परफॉर्म किए हैं. फाइल बनानी है, डायरेक्टरी बनानी है, परमिशंस देने हैं, यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, अब यहां से अब ट्रेंड आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था लिनक्स का, बिल्कुल बेसिक जो होता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट, आई हैव कवर्ड ऑल. ठीक है, अब आते हैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जो आपके मशीन को अब अलग तरीके से थोड़ा मैनेज करने को बताएंगे. फिर आपको अपने मशीन को मतलब मैनेज करने मींस अब हम स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करेंगे. जैसे आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपने भी मशीन पे, आपने विंडोज मशीन पे आपने कभी अपने स्टोरेज को मैनेज किया है? कभी स्टोरेज मैनेज किया है आपने? Installation of partition, sir. यस, हार्ड डिस्क को मैनेज किया है या जो डिफॉल्ट बना हुआ है वही चल रहा है? अभी तो वही चल रहा है. While I have guided all of you in your hardware class how we can create few partitions at our computer, as I remember. Yes, sir. Yes, sir. बहुत पुरानी बात हो गई, 2-4 मेरे ख्याल से 4-5-6 महीना पहले की बात हो गई. But I have guided all of you. Look, my dear friend, कोई भी चीज हो ना, उसे ट्राई जरूर करो. एंड अब मैं जो अभी जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने बताया,
आप अगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं ना, तो आपके माइंड में जो, खासकर बिगिनर्स के माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, यार ऐसा करेंगे पता नहीं सिस्टम डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, ये चीज, एक डर, उस डर को निकाल दो। किसके हेल्प से? वर्चुअल प्लेटफॉर्म के हेल्प से। परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट योर वर्चुअल मशीन्स। ओके फाइन, वर्चुअल मशीन डैमेज हो गई, कोई बात नहीं, फिर तैयार कर लेंगे, है ना। फिर क्या होता है, जब आप यूज टू हो जाते हैं, तब तो आप रियल मशीन पे भी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। खैर एनीवे, तो अभी हमारी बारी होगी कि हम अपने इस लिनक्स मशीन के स्टोरेज को कैसे मैनेज करें। ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट के बाद अब हम डालेंगे कि अपनी मशीन को नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट करें, यानी कि नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। उस नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में पहले मुझे आपको गाइड करनी पड़ेगी कि भाई एड्रेस पार्ट क्या होता है, यानी फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, इसके बारे में बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। फाइन। Yes. जब हम नेटवर्क में आ जाएंगे तो नेटवर्क से रिलेटेड एक दो चीजें देखेंगे एंड अपने लिनक्स को एंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर आप और भी एडवांस चीजें लिनक्स में पढ़ना चाहते हैं तो फिर ग्रेजुअली आपको सर्वर की तरफ मूव करना पड़ेगा, सर्वर पार्ट की तरफ। ओके फाइन। स्टोरेज, स्टोरेज जनरली which type of concept we have about storage? Storage means just to store data. Cloud Yes. storage, phone storage, and Yes, computer sir. storage, anything. The storage uh, means that kind of device or component at which we can store data. But Storage of materials, sir. sorry, yes, Storage Abhishek. of materials. Type. Sorry, your voice is Sir, not some clear. type of materials storage. Abhishek. Sir, I am saying that. Anybody is getting his voice clear? No, sir. Oh, sir. Abhishek, please speak slowly. Sir, can you hear me? Abhishek, you can chat me if you have any question, because your voice is not Yes, clear. sir. Fine. Now, Vinayak, stop yourself. Storing any type of material is, yes, any type of material. If any type of, not material, my dear friend. Material means it can be stones, mountain, lauki, bhindi, kaddu. We cannot store these things at the storage. We are talking about the data storage device. Fine.
I have shared my screen. Everybody can see it. Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. Storage management. See, just a concept. We will start in detail in next class. Now, hard disk. As we all know that hard disk is the main component of our computer at which we store data. वो मेन कंपोनेंट है जिसपे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड अब ये हार्ड डिस्क जो है, इसी हार्ड डिस्क के ऊपर में हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी विंडोज, लिनक्स, मैक, एनी। Yes, sir. अब ये जो हार्ड डिस्क लगे होते हैं, उस हार्ड डिस्क पे आपको बेसिक में कुछ पार्टीशंस मिलते हैं जिसमें आप अलग अलग डायरेक्टरी बना करके और अपने डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन माय पीसी आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन माय डिस्क मैनेजमेंट। This is my hard disk. Yes, sir. Okay. Now, at this machine, there are few partitions, and all partitions are primary. There is no any blank space, unused space, unallocated space. Means, if I have no any knowledge how to manage my hard disk, in that case, I am restricted to keep all my data into D directory. As per the safety of the computer, we should not keep our data into C drive, OS drive. So I will keep all my data into D directory, D drive. Yes, sir. Fine. But if we want, we can keep data into different partitions. But to create different partition, we must have some unallocated space, unused space. तभी तो हम अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट करके उसमें अपना डेटा रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपने आप को समझता हूं मैं बीसीए का स्टूडेंट हूं, तो मेरे को अपने बीसीए से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी नोट्स हैं, एवरीथिंग वो मुझे एक अलग ड्राइव में रखनी है। फैमिली मेंबर्स से भी जो रिलेटेड है वो अलग ड्राइव में रखनी है ना। उसके बाद मैंने जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं वो मुझे अलग डालनी है, वो मेरा पर्सनल डेटा है। पता है ना, कुछ बच्चे अलग से कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो अलग रख रहे हैं। मींस ओवरऑल कोई भी पर्पस बना लो माय डियर फ्रेंड, उस पर्पस में क्या है कि वी नीड different partitions at our hard disk. So we can create these partitions at Windows machine. So is it possible to create different partitions at Linux machine? Yes, it is possible. So now, see my. Sir, In this, yes.
Sir, in that slide, sir, it was showing disk 0 because there is only one hard disk. That is why it's showing disk 0, sir. Yes, that's why it is showing disk 0. If we will Why connect it more shows, hard sir, disk, disk 1, sir, because there is one disk. So why is it showing disk 0? This count, it starts from 0. 0. Look, my dear friend, it depends on the developers. And in computer field, we always start counting of anything with 0. That's why this is this 0. It's not a matter of a discussion, it's just a concept. Fine. Now, in case of Linux, hard disk HDD, hard disk drive, is named as HD or SD. In previous editions, it was known as HD, but now in these days, it is known as SD. If you have connected one hard disk, in that case, your hard disk name will be SDA. Now, there is no concept of 0 or 1. गायब हो गया विनायक? है? Yes. तो ये डेवलपर पे डिपेंड करता है वो कैसे रखता है. If you have connected one more hard disk, then SDB. One more hard disk means SDC. Okay? Yes. And SDC. अब बात आती है कि ये जितने भी हार्ड डिस्क हैं, इन हार्ड डिस्क पे अगर हम कोई पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो दैट पार्टीशन विल बी नोन एज फर्स्ट पार्टीशन लाइक SDA1, second partition SDB1, SDA1, SDA2, SDA3, and so on. Okay? ये यहाँ पे इसका ये आपका नेमिंग कन्वेंशन है. अगर यही चीज हम विंडोज में करते हैं तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव के नाम से जाना जाता है. तब हमारा टास्क होगा कि हम इस ड्राइव को कैसे क्रिएट करें, ड्राइव बनाने के बाद इसको कैसे फॉर्मेट करें, फॉर्मेट करने के बाद इसको कैसे माउंट करें, माउंट करने के बाद आप इसे कैसे अनमाउंट करें, यूज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो इसी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके? Yes. Now, I'm going to stop this class for today. Can I stop my sharing? Yes. Yes, sir. Okay. No, my dear friend. Prashant, you have asked some question, but answer is no. Why, sir? It's an important topic, I think. Sir, बहुत सारे important topic है. Okay, sir. ठीक है ना?